about the elastic collision and inelastic collision. Elastic collision, that means what? There is no loss into the kinetic energy, then which is considered as a what? Elastic collision. Okay, and उसमें भी हमने देखा था one dimensional elastic collision and two dimensional elastic collision. Over here right now we are understanding the concept of one dimension. चलो, so in one dimensions we already discussed about which thing, two body है, दो body है, वो collide हो रही है after the collisions which is having same straight path. चलो, so over here we are considering two body. ओके, दो बॉडी है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी है. तो एक का सपोज मास m1 है एंड अनदर वन का मास m2 कंसीडरेशंस किया हुआ है एंड व्हिच इज हैविंग समथिंग वेलोसिटी. वेलोसिटी को इधर डिफाइन किया हुआ है u1 से एंड यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है u2 से. ठीक है, एंड यहाँ पे मेंशन करना है बिफोर द कोलाइजन, यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट है टकराने से पहले, यानी कि बिफोर द कोलाइजन उसकी वेलोसिटी u1 है, दूसरे की वेलोसिटी u2 है. ठीक है, ड्यूरिंग द कोलाइजन दैट मींस दोनों टकरा रहे हैं, ए एंड बी दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो मास उसका m1 है एंड इसका m2 है. ओके, एंड आफ्टर द कोलाइजन क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं रहती, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है. वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसकी लीनियर मोमेंटम है वो भी चेंज होगी. ओके, सो ओवर हियर वी आर नॉट कंसीडरिंग द u1. ओके, आफ्टर द कोलाइजन क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज ऑफ दैट रीजन v1 इधर लिखा हुआ है एंड दूसरे का हमने v2 कंसीडरेशंस किया हुआ है. आल्सो ओवर हियर वी आर मेंशनिंग दैट आफ्टर द कोलाइजन. नाउ एज वी नो दैट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. क्या? एज वी नो लीनियर momentum is conserved. So linear momentum is conserved, that means what? Before the collisions and after the collisions की बात हमें करनी है. So before the collisions हम कंसीडरेशंस करते हैं m1 u1 plus m2 u2 is equal to क्या हो जाता है after the collisions? m1 v1 plus m2 v2, and this is our equation number 1. Okay, now over here what we have to do, m1 and m1 को साथ में कर देते हैं, m2 and m2 को साथ में कर देते हैं. So therefore m1 u1 minus m1 v1 is equal to m2 v2 minus m2 u2. ठीक है, so because of that reasons m1 can be common, so u1 minus v1 is equal to over here m2 common, so m2 inside the bracket v2 minus u2, and this is our equation number 2. Now as we already know that kinetic energy which is also conserved, क्या? Kinetic energy is conserved, so therefore kinetic energy के बारे में हमें पता है कि kinetic energy is equal to what? Half mv square. Okay, but over here what we have to consider, m1 u1 considerations करना है, दूसरे की जगह पे m2 u2 considerations करना है. So because of that reasons before the collision and after the collision हमें बात करना है. So यहाँ पे हम लिख देते हैं half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to क्या होगा, इधर half m1 u1 की जगह पे इधर क्या है हमारा v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर. ओके, चलो इधर तक आ गए. अगेन हमें क्या करना है, ये जो टर्म है इधर लेके आते हैं, ये जो टर्म है इधर लेके आते हैं. सो देयरफॉर 1 divided by 2 m1 u1 square minus 1 divided by 2 m1 v1 square is equal to 1 divided by 2, ये टर्म तो ऐसे ही उसकी जगह पे m2 v2 square माइनस ये टर्म इधर आ जाता है इज इक्वल टू, बिकॉज ऑफ दैट रीजंस माइनस हो जाएगा 1 divided by 2 m2 u2 square. ठीक है, now over here one thing is common from the both side, 1 divided by 2 1 divided by 2 1 divided by 2 1 divided by 2 which is common, so उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो वो कैंसिल आउट कर लेंगे. so therefore m1 कॉमन निकाल लेते हैं. so m1 inside the bracket u1 square minus v1 square is equal to, इधर से कॉमन निकाल लेते हैं m2 inside the bracket v2 square minus u2 square. ठीक है, now a
square minus b square. A square minus b square, that means what? A minus b and another bracket a plus b. So over here we are applying that concept. इधर लिख देते हैं a square minus b square is equal to another one bracket में a minus b, another bracket a plus b. चलो so ये हमारा इक्वेशन जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इधर हम सिंप्लीफाइड करते हैं. चलो so because of that reason m1 inside the bracket u1 minus v1 another bracket u1 plus v1 is equal to m2 inside the bracket same over here v2 minus u2 and another one v2 plus u2, and this is our equation number 3. Now what we have to do, we have to do equation number 3 divided by equation number 2. क्या करना है इधर हमें? equation number 3 divided by equation number 2 हमें करना है. चलो so equation number 3 कौन सा है? ये है, तो वो लिख देते हैं m1 inside the bracket u1 minus v1 another bracket u1 plus v1 is equal to m2 inside the bracket v2 minus u2 and another bracket v2 plus u2. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है जो यहाँ से हमने लिखा. ओके, एंड डिवाइड बाय क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है? ये है हमारा. सो डिवाइड बाय में हम लिख देते हैं क्या आता है? m1 inside the bracket u1 minus v1 and इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया? m2 inside the bracket v2 minus u2. ठीक है, so over here what we can cancel out? m1 cancel out, this one also cancel out, m2 cancel out, and this term will be cancel out. The remaining is only what? u1 plus v1 whole divided by में कुछ है only 1 है because वो तो cancel out हो चुका है. and over here क्या है remaining? only this term. so v2 plus u2 divided by में कुछ नहीं है, that means 1. चलो so simplifications करें तो क्या हो जाएगा? u1 plus v1 is equal to v2 plus u2. so now u2 को इधर लेके आते हैं and v1 को is equal to दूसरे वाले जैसे. because of that reason u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. This is our equation number 4. So the relative velocity of the A with respect to B before the collision and after the collision की बात करते हैं. So इधर हम लिख देते हैं the relative velocity of body A with respect to body B is equal to relative velocity of body B with respect to body A. इधर क्या लिखना है? relative velocity of body A with respect to B before the collision, and over here we have to write after the collision. चलो so यहाँ पे एक बात important है, relative velocity of body A with respect to body B before the collision. Okay, so u1 minus u2 आ रहा है, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, and यहाँ पे क्या है? v2 minus v1 है, that means what? relative velocity of body B है यहाँ पे with respect to body A after the collision. Okay, so for the elastic collision in one dimension, relative velocity before the collision equal to the relative velocity after the collision. Now we have to measure the value of the velocity v1 and v2. suppose हमें find out करना है after the collision. तो using the equation number 4 कौन सा था हमारा? u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. okay, now using these equations पहले हम v2 का equations बना देंगे. v2 की वैल्यू क्या होती है? v2 is equal to u1 minus u2, and ये v1 को इधर लेके जाता है, तो because of that reason v1 हो जाता है. so ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू v2 की जो है वो वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है. चलो तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है? इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है? m1
that reasons m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 की वैल्यू क्या है हमारी u1 minus u2 plus v1. So now m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1. ब्रैकेट ओपन करना है हमें. So m2 u1 minus m2 u2 plus m2 v1. ओके चलो. सो यहाँ पे हमें v1 एंड v1 को इधर भी रहने देते हैं. बाकी की जो वैल्यू है वो इस इक्वल टू पे उसके पास ले जाते हैं. Therefore m1 u1 plus m2 u2 ये टर्म एंड ये टर्म इज इक्वल टू दूसरे पार आ जाता है. बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस प्लस है तो माइनस हो जाता है. m2 u1 plus m2 u2. ओके रिमेनिंग इज ओनली व्हाट ये है यहाँ पे क्या है v1 m1 v1 एंड m2 v2 इज इक्वल टू के दूसरे पार है तो उसको लिख देते हैं m1 v1 plus m2 v1. ओके चलो. नाउ u1 एंड u1 को साथ में लिख देते हैं एंड u2 एंड u2 के साथ में लिख देते हैं. सिमिलरली ओवर हियर v1 एंड v1 को हम कॉमन निकाल लेते हैं. सो इक्वेशन में होगा क्या अभी m1 एंड u1 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2 एंड यहाँ पे हम v1 कॉमन निकाल लेते हैं. तो इनसाइड द ब्रैकेट m1 प्लस m2. ठीक है चलो. नाउ यहाँ पे m2 u2 प्लस m2 u2. ओके सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 m2 u2 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या है कॉमन वी कैन टेक एज अ कॉमन u1. चलो. सो u1 इनसाइड द ब्रैकेट m1 माइनस m2 प्लस इधर क्या हो जाता है 2 m2 u2 इज इक्वल टू v1 इनसाइड द ब्रैकेट m1 प्लस m2. ठीक है. नाउ ओवर हियर v1 की वैल्यू इधर से हमें मिल जाएगी. तो v1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m2 जो होगा वो कहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन so v1 is equal to what v1 is equal to m1 plus m2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. so therefore u1 inside the bracket m1 minus m2 whole divided by m1 plus m2 plus 2 m2 whole divided by m1 plus m2 एंड यहाँ पे u2 है तो वो u2 यहाँ पे हमें लिख देना है. ठीक है चलो. सो ये हमारा इक्वेशंस हो जाएगा फॉर दी v1 का एंड यूजिंग दिस इक्वेशंस वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दी v1 वो कौन सा है हमारी जो बॉडी 1 है a नंबर की बॉडी है उसकी वेलोसिटी हमने कंसीडरेशंस की है v1. वहां ये वैल्यू हम पुट आउट करेंगे m1 m2 u1 एज वेल एज दी u2. ओके फॉर दी बॉडी नंबर b वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन v2. उसके लिए हम इक्वेशंस लिखते हैं. सो सिमिलरली फॉर दी v2 का इक्वेशंस डिराइव करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जहाँ पे 1 दिख रहा है वहां पे 2 कर देना है, 2 दिख रहा है वहां पे 1 करना है. दैट मींस ये इक्वेशंस में हमें इंटरचेंजिंग करना है. ठीक है चलो. सो यहाँ पे u1 है यहाँ पे u1 है तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन u2 लिख देते हैं. m1 है तो m2 माइनस m1 होल डिवाइडेड में m2 प्लस m1 प्लस इधर m2 है बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे m1 कर देते हैं इधर m2 प्लस m1 ब्रैकेट ओवर इनटू u2 है तो यहाँ पे क्या लिख देना है u1. ओके एंड आफ्टर द इक्वलाइजेशन v2 की वैल्यू हमें कंसीडरेशन की है फॉर द बॉडी नंबर b. ये इक्वेशन से हमें मिल जाएगा v2.